Hello dear friends, once again welcome back to my channel Scientific Phenomenal Facts। आज मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक समझाने वाला हूं और आज के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा बल्कि और ज्यादा आप लोगों को केमिस्ट्री से मोहब्बत होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन वो कोई अनजाना चीज नहीं है, वो हम लोगों का रियल लाइफ में रियल एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों जब मिक्स होता है तब वो फॉर्म करता है एक्स वाई। तो एक्स वाई वो हम लोगों का हाइब्रिड प्रोडक्ट है। तो वो एक इक्विवेलेंट सेट है किसका? पहले वाला का, एक्स का और वाई का। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इट इज द हाईली मॉडिफाइड study of covalent bonding, the process of mixing of pure orbitals to give a set of equivalent orbitals। यही है मेरा कंसेप्ट और इसको हम लोग थोड़ा थॉरोली समझने का कोशिश करेंगे। तो मैं मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रूल्स का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को कैसे अबाव प्रिंसिपल द्वारा इलेक्ट्रॉन को इनपुट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैसे एक सेल से दूसरा सेल में मूव करता है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूं। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन देयर अराइजेस 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स: s orbital, px orbital, py orbital and pz orbital। okay, so now let us see the structure of each of the orbitals in a proper way। This one is s orbital, okay, this one y axis, this one x axis and this one z axis। This is the shape of s orbital। Now let's see for px orbital। This one is nucleus, this one y axis, x axis, z axis, but here it is py orbital। Why it is py orbital? Because here it is along y axis, okay। And this one px orbital। Why it is px orbital? Because this orbital is along x axis। Clear now? Now it is simple, the orbital which is along z axis it will be pz orbital। This one is pz orbital। Okay, now very easy to draw the orbital now। The concept of hybridization it leads to the genetic variation in case of living beings and in case of non-living thing or chemical substances it leads to chemical changes in their properties।
मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाइब्रिडाइजेशन ये एक हाईली मॉडिफाइड स्टडी है कोवैलेंट बॉन्डिंग का। कोवैलेंट बॉन्ड आर मेनली ऑफ टू टाइप्स or you can say molecular orbitals. One is sigma bond, another one is pi bond. Here let you see, this one is s orbital. Okay now, and there another s orbital. When s orbital they mixed together, then जब भी s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ये है ओवरलैपिंग, तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, बीच में ये थोड़ा स्वेल अप होगा, ओवरलैपिंग का जगह में थोड़ा स्वेल अप होगा, ठीक होगा वो स्पेस। तो हमें एक चीज ध्यान में रखना है, जब ओवरलैप करता है ऑर्बिटल्स, तब ओवरलैपिंग जो स्पॉट होता है उसमें थिकनेस आ जाता है। तो ये है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, किसका? s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का। ये px के साथ ओवरलैप करता है, px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो क्या बनता है? तो ये है ओवरलैपिंग। तो s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने पर भी हमें मिलता है सिग्मा बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इधर में ओवरलैप कर चुका है तो ये मोटा बनेगा, थिक होगा, तो इसमें भी हमें मिलता है सिग्मा बॉन्ड, इधर में भी मिलता है सिग्मा बॉन्ड। Now let me show you when py orbital overlap with another p orbital, py orbital, then what happens? It also forms pi bond. जब py ऑर्बिटल दूसरा py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, उसमें भी वो पाई बॉन्ड ही फॉर्म करता है, और उसका हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी सेम होता है pz का जैसा। Here little down, okay? Here it will be little down. So here's pi bond. Such type of bond is pi bond. Here let us see the definition of sigma bond and pi bond. First of all, sigma bond is the bond which is formed by the linear overlapping, or we can say end-to-end overlapping of the orbitals. And pi bond is formed by the parallel, or we can say side-to-side overlapping of the orbitals. It leads to the formation of pi bond. And linear overlapping leads to the formation of what bond? Sigma bond. Here this one also py, okay? And this one pz orbital. Can you tell me why it is pz orbital? Because it is in x-axis. Sorry, because it is in z-axis. When it overlaps, when both the pz orbital overlaps, it overlaps, the pz orbital overlaps. These two pz orbital
there takes place parallel overlapping. Okay, side to side, or you can say parallel. So it also leads to the formation of pi bond, and its hybridized structure also like this, same here. Why same? Because parallel overlapping takes place, that's why. Now we will proceed to hybridization. Here hybridization are of three types. Okay, what are they? Sp3, Sp2 and Sp hybridization. Okay, now let's see. Here Sp3, here we are writing this 3 as superscript. Here always we understand like this way. Sp3 hybridization meaning here single bond, or we can say carbon or we can say carbon single bond. In case of Sp2 hybridization, there we understand double bond. Here carbon double bond. In case of Sp hybridization, we understand like this way. It has triple bond, or carbon triple bond. Okay, here this single bond meaning sigma bond. Here double bond meaning what? Any idea? Whether both are sigma or both are pi, or one is pi or other one is sigma. What is the correct one? Here this one is pi bond because parallel overlapping takes place, and this one is sigma bond. Always we have to keep it in our mind. Both can never be the same bond at a time between carbon bonding. Now in case of triple bond, one should be pi, other also pi, and only one is sigma. These two bond, it forms by the parallel overlapping of the orbitals. Which two orbitals? Can you tell me? Any idea? Pz and Py. There in this case, which orbital, the overlapping of which orbital it leads to the formation of pi bond? Any idea? Here in this case, Pz orbital overlaps and it leads to the formation of pi bond. Okay, now let us move towards the Sp3 hybridization of carbon. Carbon in its ground state or we can think normal state, this one. Okay, here according to above principle, 1s2, 2s2, 2p, here also 2 we have to write now, but here this p orbital, it has the capacity to occupy 6 electrons, is it no? Now how that 2 electrons we can put there on p orbital? How? In my video of electron configuration rules and concept, I have already explained about Pauli's exclusion principle. What it says, the maximum number of electrons that can be accommodated or occupied in an orbital is 2, not more than 2, and both should be in opposite spin. Is it no? Here
if this p orbital, it has the capacity to occupy 6 electrons, now how 2 electrons can be accommodated in each orbital? Is it possible? No. That's why this p orbital, it has been divided into 3 suborbitals. That is px, py and pz. Clear? So here 2 electron will enter, here 2 electron will enter, and here 2 electrons will enter. And here 2 electrons will enter. Okay, no? Now all together 6. Satisfied? Now let me put there the proper electron configuration or electronic configuration. So here twice px, twice py, and twice pz. Here 1 electron will enter, 2, 2, 4, 1, 5, then remaining 1, 6. Here pz orbital 0. Is it no? It is in the ground state. Now for excited state, or we can say mixture state, carbon, one S2, 2 S2, two S1. 1 electron should be shifted to or transferred to pz orbital. Okay. Here twice px1, twice twice py, and twice pz. Now here also 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Clear? Here this is in mixture form, in the excited state. And all of us know that this one is the valence shell. This valence shell, it has the capacity to occupy 8 electrons. Now, in hybridized state, one S2, twice, here it is for Sp3, 1 S and P3, or you can say 3P, S3P or Sp3. So here 2 Sp3, here 1, twice Sp3, here 1, and twice Sp3, here also 1. So here you see, this is in hybridized state, Sp3, Sp3, Sp3 and Sp3. Here, by this electronic configuration, you may not able to understand properly. Let me show you the energy level for this carbon also. This one is the energy level. Okay, this one 1s, first shell. Here 2 electrons enters. This one second shell, twice s. This one third shell, twice p. Here for ground state, I am explaining for ground state.
in s orbital, there are also 2 electrons. It has been divided into 3 suborbitals, px, py and pz. Here 1 electron enter, here 1 electron enter. Here 0. It is in the ground state. Here you can see excited state. First shell 2, second shell twice s, third shell twice p. 3 suborbitals, px, py and pz. Okay, so from this s orbital, so from this s orbital, 1 electron will shifted to pz orbital with the same spin. Why same spin? Because now it is alone. If there are 2 electrons present in an orbital, then it should gain opposite spin for hybridized state. Here 1s filled shell. Do you know here what change will take place? Same like this hybridized state. Twice Sp3 hybridized. Twice Sp3 hybridized. So here 4 orbitals. So here will be 4 orbitals. One s and 3p orbitals. Now let's see the sp3 hybridization of carbon. So here carbon should have 4 orbitals, 1s and 3p orbitals. Here sp3 hybridized, sp3, here this one py, here sp3, this one px, here sp3, this one pz. Okay, this one is the structure of carbon in its hybridization state. Now let's see the bonding in methane. बॉन्डिंग मीथेन का केस में इसका बॉन्डिंग किस किस्म का होगा, चलिए हम लोग देखते हैं. Here sp3 hybridization of methane. Methane, its molecular formula is CH4. Is it no? 1 carbon and 4 hydrogen. Carbon bonded to 4 hydrogen. Like this, you know. From this simple structure, bonding structure, we can draw the hybridized structure. Here, all the orbitals of carbon will get overlaps with the s orbital of hydrogen. Okay, this sp3 hybridized orbital of carbon
will get overlapped by the s orbital of this hydrogen. Same thing happens in each case. Here also s orbital, it overlaps with, it makes bond with sp3 orbital. Here sp3, this one is sp3, okay, this one is sp3, this one is sp3. Here also same, s orbital of hydrogen overlaps with sp3 hybridized orbital of carbon. Now what bond it forms? Any idea? Here it forms sigma bond. In each cases it forms sigma bond. Do you know why? Can you tell me why? Because here linear overlapping takes place. Linear, or you can say end to end overlapping. That's why it leads to the formation of sigma bond. जो linear overlapping होता है उसके वजह से या end to end का overlapping द्वारा हमें मिलता है sigma bond. तो ये हर जो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमें याद रखना है. तो चलिए हम लोग ईथन का बॉन्डिंग देखते हैं. ईथन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? ईथन C2H6, 2 carbon and 6 hydrogen. Okay, so here 1 carbon present. If we take another carbon and instead of this hydrogen let us make tetrahedron structure for this carbon also. Now here you see, here sp3 hybridized, here sp3 hybrid orbital of this carbon will overlap with the sp3 hybrid orbital of another carbon. It forms sigma bond. Okay, it forms sigma bond. Okay, here the same thing happens. 2 carbon, here 2 carbon, here 6 hydrogen. For this carbon 3 hydrogen, for this carbon also 3 hydrogen. The s orbital of this hydrogen will overlap with sp3 hybridized orbital of this carbon. Same thing happens in each case. All this leads to the formation of sigma bond. Here also sp3. Here also s overlaps with sp3. Here also s orbital of hydrogen overlaps with sp3 hybridized orbital of carbon. This is the bonding of ethane. Now let us move towards sp2 hybridization of carbon. तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा, आप लोगों का एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा, एक्साइटेड स्टेट में भी ऐसा होगा, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ये ऐसा नहीं होगा. इसमें एक चेंज आएगा, इसमें ट्वाइस p रहेगा और इधर में रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर में, जो pz ऑर्बिटल का रूप में है. तो ये बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन
रहेगा। तो इसमें क्या होगा, 1s and 2p orbitals. Okay, that's why sp2 hybridization. कार्बन ये आपका है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये मान लीजिए pz, क्योंकि पहले पाई बॉन्ड वो pz ही फॉर्म करता है, उसके बाद अगर फॉर्म करता है तो py, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक्स पार्ट नहीं करता है। ये होगा py। क्यों py होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल रूप में होना चाहिए इसको, उसीलिए ये pz को हम लोग नीचे तक लाते हैं, क्योंकि pz जब पाई बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग करता है, तो नीचे में भी इसको ओवरलैप करवाना जरूरी है, उसीलिए ये ऑर्बिटल कुछ भी नहीं, ये पाई का कंप्लीट फॉर्म है। ये है px। ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका मतलब है बैक साइड में। ये हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कि नहीं, है कि नहीं। ये भी sp2, ये भी sp2, इसको छोड़कर अभी हम लोग इथिन का बॉन्डिंग देखेंगे, या हम लोग उसे इथाइलिन भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिखाया, तो sp2 में भी कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है C2 no H4, they are double bond, is it? तो ये एक बनेगा पाई बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें एक बनेगा पाई बॉन्ड, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4, दो कार्बन, इसमें ये pz ऑर्बिटल दूसरा कार्बन का, ये हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये भी है कि नहीं। 1 2 3 1 2 3, दिस वन pz, ये pz है, ओके। दिस ऑर्बिटल इज pz, ओके, ये pz है, और ये भी pz ऑर्बिटल है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ओके। Here sp2 hybridized orbital of this carbon and sp2 hybridized orbital of this carbon both overlaps and form sigma bond, okay. This bond is sigma. Whatever happened for this case,
Same thing happen for this case also. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का और बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जो बाकी बचा pz ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप करके बनेगा पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड बनेगा? क्योंकि ये पैरेलली और साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर चुका है, इसीलिए। अभी हम लोग कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ग्राउंड स्टेट कार्बन का यही है, एक्साइटेड स्टेट में ये इसमें चेंज होगा। इसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में एक S और एक P मिक्स होगा। ओके, और ये दो छूट जाएगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक S और एक P। तो इधर से एक py ऑर्बिटल इधर मूव करेगा। ओके, तो ये बनेगा py, ये बनेगा pz। ये कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दो है ना, एक दो, तो एक दो। ये pz या px, ये py और ये pz। ओके, ये py, ये pz ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं किया है। तो अभी हम लोग इथाइन का, या आप लोग एसिटाइलिन, या आप लोग एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, उसका बॉन्डिंग देखेंगे। एसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें दो कार्बन है, एक एक हाइड्रोजन दोनों का है कि नहीं? इसका फॉर्मूला है Sp2 H2। yes or no? It is alkyne group. So here there is triple bond between these two carbons. This one pi bond, this one pi bond, and this one sigma bond. Here two hydrogens in each carbons. Now let us see the bonding for acetylene in orbital form. Here two carbons, this one is this one carbon, this one
this one sp hybrid orbital, this one another sp hybrid orbital of this carbon, and this sp hybrid orbital of this carbon, and this sp orbital of this carbon is this one, and this sp hybrid orbital of this carbon is this one. Same this one p y, this one p z. Here two carbons, here this one is the s orbital of this hydrogen. It gets overlaps with the sp orbital of this carbon. This one is this one, okay? And it forms sigma bond. And this sp orbital of this carbon, it will get overlaps with the sp orbital of this carbon. For this carbon, this one is this one. And for this carbon, another carbon, this one. But it has the same, but the carbon is same, no. But the carbon is same, no. So for this carbon, this sp orbital is this one, and this sp orbital is this one. So here, both these sp orbitals of each carbon overlaps and forms sigma bond. Here this sp orbital of this carbon, it gets overlaps with the s orbital of this hydrogen and forms sigma bond. Now what's about these two p orbitals? Now what's about these two p orbitals? Here py overlaps with py, it forms pi bond. Similarly, pz and pz orbital overlaps, forms pi bond. Okay, so here carbon carbon triple bond, 2 pi 1 sigma. Okay now let's see. अभी हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का बॉन्डिंग. ये थोड़ा अलग होगा. यहां मैं आप लोगों को नाइट्रोजन का सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाने वाला हूं. तो नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7, नो. तो देखिए, 2 will enter in the first cell, 2 will enter in the second cell, then 3 will enter in the p orbital. Okay, twice p orbital. Here अभी आप लोग देखिए, इधर में है 7 टो, 7 टो, इधर में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अभी ये कैसे होगा? क्या कोई आइडिया है आप लोगों का? क्या कोई आइडिया है इसमें? एनी आइडिया? तो इसमें क्या बनेगा? तो मैं यहां नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट बना चुका हूं. यहां मैं नाइट्रोजन के लिए डायरेक्ट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनाने वाला हूं. तो इधर में क्या होगा? sp3, ये सेकंड शेल है ना, तो ट्वाइस sp3 मतलब सेकंड शेल. ये s ऑर्बिटल इधर में रहेगा मौजूद, और ये एक s और 3 p को ले लेगा. तो अभी बना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर नाइट्रोजन.
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? यह भी टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है इसका। इनका कितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा? 1, 2, 3 और ये 4। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑर्बिटल इधर में पार्टिसिपेट करेगा। ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये शेडो है, ये मतलब ये बैक साइड में, और ये है हम लोगों का ये ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो फील्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स से, 2 इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, और पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल द्वारा एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, और वो भी ऑपोजिट स्पिन में। तो ये तो बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ही नहीं, तो ये तो बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो ये तो किसी और एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा ही नहीं, है कि नहीं? बाकी ये 3, 1, 2, 3 जो ऑर्बिटल है यही बॉन्ड फॉर्म करेगा। px, py, pz समझ सकते हैं हम लोग। तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ये एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ये sp3 hybridized orbital. This sp3 hybridized orbital of this nitrogen will overlap with one s orbital of this hydrogen. Similarly, this orbital also sp3. It forms sigma bond. It also forms sigma bond. Here also the same formation of sigma bond. As already we have come through that in each of the cases here we can get to see linear overlapping takes place. That's why here this one is the non-bonding orbital. Okay, non-bonding. Clear now? This one non-bonding orbital. हम लोग तो sp3, sp2 and और sp हाइब्रिडाइजेशन सीख चुके हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है? कैन यू टेल मी which bond is stronger between pi and sigma? Here let me tell you, pi bond is weaker than carbon sigma bond. Okay, carbon sigma bond due to laser overlapping of electron clouds. पाई बॉन्ड का केस में ओवरलैपिंग पैरेलल होता है ना, तो उसमें फिसल जाता है, और सिग्मा बॉन्ड वो बैंड होता है, हुक जैसा, वो अटक जाता है, बहुत मजबूत होता है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। मैं सिर्फ ये जोक्स किया। ओके, दैट वन हुक्स लाइक नो जोक्स, प्लीज डोंट माइंड इट, please don't take it rigidly. And if you enjoyed, then please keep watching my channel Scientific Phenomenal Facts. Thank you.